Mutations characteristics: rare, random, sudden, rare, random, sudden, non-directional, non-directional, directional, mostly recessive, mostly recessive, rare, random, sudden, non-directional, mostly recessive. नॉन डायरेक्शनल डिस्कस करे थे हम लोग. नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? इट कैनॉट बी डिटरमाइंड. The net result is not expectable or mutations may occur in any gene and produce any unknown effect. This is mutation theory of ego disease. This is mutation theory of ego disease. Ego disease ने जो theory दी थी उसके points. Rare, random, sudden, non-directional, mostly recessive. Reversible. The changes can be reverted also. Reversible भी हो सकते हैं. Mostly mutations are harmful. Mostly mutations are harmful. They are not always harmful. Mutations could be favorable as well. This completes the mutation theory. ठीक है. जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कुछ, वो डिस्कस करते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट पेज. डिसऑर्डर्स. कुछ डिसऑर्डर्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं. Like for example, we have discussed Turner's syndrome, 44 plus XO.
Then we discussed Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome ये डिस्कस हो चुका 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये डिस्कस कर चुके हैं. Down syndrome we have discussed. Trisomy of 21st pair. 21st pair. अच्छा. Phenyl ketone urea. Phenyl ketone urea. Now this phenyl ketone urea, it is also written as PKU. PKU disorder. It is caused by deficiency. It's a disorder caused by mutation. Deficiency of phenyl pyruvate hydroxylase enzyme. ये एब्सेंट, ये जो एंजाइम है ये एब्सेंट हो जाती है, hydroxylase enzyme. And because of this deficiency, this enzyme deficiency, phenyl pyruvic acid begins to increase in the body. Phenyl pyruvic acid, it increases in the body, especially in the brain. Now when this increases in the brain, it causes severe mental retardation, severe brain damage. Severe brain damage. ठीक है, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी है. ये जो अब कुछ डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें एंजाइम्स की डेफिशिएंसी डिस्कस होगी. ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सी डेफिशिएंट है? किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है? हाइड्रोक्सिलेज की. हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज डेफिशिएंट or is absent. The result is severe brain damage. L-captone urea. L-captone urea. अब इसमें भी एंजाइम की डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी ऑफ homogentisate oxidase enzyme. Homogentisate oxidase enzyme is absent. ये एंजाइम एब्सेंट हो जाती है. As a result, this L-captone, which is homogentisic acid, it increases in the body. It increases in the body. The color of urine becomes reddish brown in color. Becomes reddish brown. यूरिन का कलर चेंज हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक मिनट. अभी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया को हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव. इसका मतलब क्या होता है? ऑटोसोमल
recessive. This alkaptonuria is also autosomal recessive. दोनों जो disorders हैं ये भी autosomal recessive. Autosomal recessive का मतलब क्या हुआ? ऑटोसोम मतलब ये जो 44 क्रोमोसोम्स है उस पे कहीं जीन है, ठीक है, और उसका जो जीन है वो डिफेक्टिव होकर रिसेसिव हो जाता है, ठीक है. इट्स ड्यू टू रिसेसिव जीन कंडीशंस. ये किस वजह से हो रहा है? रिसेसिव कंडीशन में हो रहा है, डोमिनेंट जीन की वजह से नहीं है. तो किस वजह से? रिसेसिव की वजह से. तो नेचर कैसा बोल देते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव. चलिए नेक्स्ट पेज. हीमोफीलिया. हीमोफीलिया. हीमोफीलिया is also known as bleeder's disease. इसे हम क्या बोलते हैं? bleeder's disease. It was discovered in the royal family of England. ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है, क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस चार्ल्स, इनमें डिस्कवर हुई थी. The blood clotting is delayed. Blood clotting is delayed. Blood clotting देर से होती है. It is X-linked recessive. किस वजह से होती है? X-linked. जीन किस पे है? X पे है. X-linked recessive. इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो जैसे मेल है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है. अगर मान लीजिए मेल में ये क्रोमोसोम आ गया जिसमें रिसेसिव है तो ये अफेक्टेड हो जाएगा. इट कुड बी अफेक्टेड बाय द डिजीज. So male is having dominant gene on the X chromosome. Y पे तो कुछ है ही नहीं. It is X-linked recessive. अगर Y पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी डोमिनेंट जीन है तो क्या होगा? अनअफेक्टेड. No disease. And let us talk about the female. X capital H, X capital H. No disease, unaffected. Unaffected. Then X capital H, X small h. अब इसके अंदर है तो सही ना, इट्स अ हाइब्रिड. वो इंडिविजुअल्स जो जीन्स तो कैरी करते हैं लेकिन खुद अफेक्टेड नहीं होते, इन्हें हम बोलते हैं कैरियर्स. दिस वुड बी द कैरियर फीमेल. कैरियर क्या होता है? इट हैज द जीन but the gene is recessive. But the gene is recessive. It is heterozygous. Heterozygous है, capital H small h होगा. It is heterozygous, and because it is heterozygous, it is unaffected. Not affected. इसमें डिजीज नहीं आएगी क्योंकि इसमें तो कैपिटल H है. कैपिटल H की वजह से हीमोफीलिया नहीं होगा जैसे इसमें नहीं हुआ था मेरे में. अब इसमें एक केस है स्मॉल h और स्मॉल h वाली जो फीमेल है, it dies. So basically in the population, no female is affected. Only the males are affected. Only the males are affected. The females act as carriers. Females act as the carriers. Only the males are affected. If a normal male is married to a carrier female, ये नॉर्मल मेल हो गया, अनअफेक्टेड. ये वाला
It is married to a carrier female. अभी एज सच तो दोनों ही नॉर्मल होंगे, क्योंकि इसमें भी हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से इसमें डिसऑर्डर नहीं आएगा। इस केस में अगर आप इसकी प्रोजेनी बनाओ, तो एक तो ऑफस्प्रिंग ये बन सकता है एक्स एच कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच, एक केस ये बन सकता है एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, कैरियर फीमेल, देन द नॉर्मल मेल x capital H y, and then this individual x small h y, एक ये इंडिविजुअल बनेगा। The females are carriers and the males are sufferers. Females are carriers and the males are sufferers. In this case, this female passed on the gene into the male. यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है, एक लाइन बोल देते होते हैं, females are carriers and the males are sufferers. अगर ये लाइन लिखी है तो डिसऑर्डर कौन सा कैसा हो जाता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। This line, females are carriers and males are sufferers, is for X-linked recessive disorders. इसके लिए है। समझ आया? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। एक्सटिंक्ट रिसेसिव का मतलब क्या हुआ, रिसेसिव जीन की वजह से डिसऑर्डर है। और वो रिसेसिव जीन कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पे है। कहाँ पे है, एक्स क्रोमोसोम पे। मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और वो अगर ऐसा हुआ जिसपे रिसेसिव जीन है, इस मेल में ये डिजीज आ जाएगी, तो मेल वुड बिकम अफेक्टेड। बट फीमेल्स में क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों पे अगर कैपिटल एच है तो अनअफेक्टेड है, कैपिटल एच स्मॉल एच कंडीशन है तो कैरियर है, और स्मॉल एच वाली जो फीमेल है, इट डज नॉट सर्वाइव। सो इन द पॉपुलेशन आइदर देयर आर नॉर्मल फीमेल्स, totally normal, or the carrier females. If a carrier female marries a normal man, then what happens? There is a 50-50% chance that the son, the male child, would be affected. There is 50% probability. एक मेल ये है, एक ये वाला है. So out of these two males, the male child, one is affected. इसमें probability कितनी आ जाती है? 50% probability of son becoming affected. 50% probability of the sun being affected. Sorry, I'm moving on to the next page now. नोट कर लिया सबने? Next disorder, albinism. Now, in this disorder, melanin pigment is not formed. In this disorder, melanin pigment is not formed. Melanin pigment is a pigment which gives or which provides skin, ears, and eyes their colors. Their colors.
whatever the color of the hair is, whatever the color of the skin is, or whatever the color of the eye is, it is because of melanin pigment, right? And in albinos, in this condition, there is no melanin formation. It is due to deficiency, of tyrosinase enzyme. Tyrosinase enzyme. Melanin is formed in the body by a reaction. This amino acid tyrosine, it breaks into melanin. And this action is produced by the enzyme tyrosinase. Tyrosinase की वजह से ये एक्टिविटी हो पाती. If this enzyme is deficient, no melanin is produced. Melanin नहीं बनता. Right? This is autosomal recessive disorder. इसका नेचर कैसा होता है? Autosomal recessive. Autosomal recessive disorder. ऑटोसोम पे होगा और किस वजह से होगा? रिसेसिव जीन की वजह से होगा. एल्बिनिज्म क्लियर है? चलो ठीक है, एल्बिनिज्म तक हो गया. अब आगे कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह की होती है. रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस. The person is unable to see these colors. The red color blindness is known as protenopia. 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 सबसे पहले डिस्कवर हुई थी. Green color blindness is known as deuteronopia. Deuteronopia. The blue color blindness is known as tritinopia. Tritinopia. All of these 3 are autosomal recessive disorders. ये कैसे हैं? Autosomal recessive disorders. Autosomal recessive disorders. Okay. Color blindness is also X-linked. X-linked also. X-linked recessive भी होती है. The X-linked recessive disorder is the red-green. इसे हम क्या बोलते हैं? Red-green. दोनों ही कलर्स नहीं दिखते. Red-green color blindness. Red-green color blindness. नोट कर लिया सबने? आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो.
कलर ब्लाइंडनेस के बाद लास्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, muscular dystrophy is due to deficiency of dystrophin protein, dystrophin, dystrophin protein। ये प्रोटीन नहीं बनता, hence muscles begin to degenerate। Muscles begin to degenerate, muscles खराब होनी शुरू हो जाती हैं। And this degeneration is known as dystrophy। ये दोनों ही तरह की होती है। It may be autosomal dominant हो सकती है या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। दोनों में से किसी भी टाइप की हो सकती है, तो भी ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट, एनी टाइप। These are the common genetic disorders which we have to study। Thalassemia, thalassemia is the type of anemia due to defective protein chains, in hemoglobin। hemoglobin में प्रोटीन चेन्स डिफेक्टिव हो जाती है। This condition is known as thalassemia। अब हीमोग्लोबिन में हमने दो तरह की चेन्स पढ़ी थी। हीमोग्लोबिन हैज द अल्फा चेन्स एंड द बीटा चेन्स। अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट है तो क्या हो जाता है? अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। और अगर बीटा चेन में डिफेक्ट होगा तो सिंपल बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया इज मोस्ट कॉमन। थैलेसीमिक पेशेंट्स को लगातार almost one per week they need blood transfusion। The patients need blood transfusion। So then patients require blood transfusion की जरूरत है। Okay? This is about the genetic disorders जो अपने को पढ़ने होते हैं। ठीक है, कॉमन डिसऑर्डर्स यही है जो अपने को पढ़ने होते हैं। चैप्टर में सिर्फ एक चीज और रह गई है,